Hello everyone and welcome back to Love English with Love by Love. In today's video, we are going to talk about commonly mistaken words that we use in pairs, but at times what we do is we get totally confused about when to use these particular words. Okay, so we look at a list of words like these who sound similar. At times the spellings might not be the same and the pronunciation also might not be the same, but we are totally confused about this and then we mistakenly use these words in place of the other. Okay, so let's start watching this video. The first example that I have for today are two words. So it's a pair, so we're looking at two words now. The first one is amiable. The second word is amicable. Okay, amiable talks about the characteristic of a person. Amicable talks about the relationship of a person. Okay, amiable का मतलब ये होता है कि वो इंसान किस प्रकार का है. अगर वो इंसान बहुत ही खुश मिजाज है, बहुत ही फ्रेंडली है, तो हम उसको बोलते हैं he is an amiable person. ठीक है, और जब हम उस रिश्ते के बारे में या उस दोस्ती के बारे में बात करते हैं तब हम उसको amicable बोलते हैं. Okay, example, Leena is an amiable person, so her relationship with me is very amicable. ठीक है, लीना बहुत ही खुश मिजाज लड़की है, इसीलिए उसका मेरे साथ जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी है. Okay, so we are talking about two different things. We are talking about amiable, about the characteristic of a person, and amicable, that is the relationship. All right, let's move on to the next one. Our next set of words are again very confusing and most of the times we do not know whether we should use this or that. So this set is weather and climate. I'm sure most of us have been confused that whether you should use weather or climate. Okay, so what is weather? Weather is something that varies a lot. Okay, it keeps on changing. It doesn't have a fixed time. Whereas climate is something which is there for a certain period of time in a particular region. Okay, so जो weather है वो है मौसम, जो मौसम हमेशा बदलता रहता है वो है weather, and climate जो है वो वहाँ का जलवायु है जो कभी कभी 2 या 3 महीने तक भी हो सकता है. So the climate can be hot, the climate can be cold, the weather keeps on changing. It can be humid, it can be moist, it can be a lot of different things. Okay, for example, the weather today is cold and pleasant. Okay, आज का जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा और बहुत ही खुशनुमा है. Okay, the climate in this region is usually hot. इस जगह की जो climate है, जो जलवायु है, ये अक्सर बहुत ही गर्म होता है. Okay, let's move on to the next one. Our next pair of words are again confusing. Isle and isle. Okay, the first one is isle, I-S-L-E, isle. इसका मीनिंग होता है an island. Okay, ये है एक टापू. The second one is A-I-S-L-E. It is the entrance or the passage of seats. The place where you sit, that is known as an aisle. ठीक है, so probably that's an aisle seat which is near the doorway, or usually you'll find an aisle seat in an aeroplane or an aircraft. Okay, for example, I want to have my birthday celebration on an aisle. Okay, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो जन्मदिन का celebration हो वो एक टापू पर हो. Okay, usually when I travel I prefer the aisle seats. अक्सर जब भी मैं यात्रा करती हूँ उस समय मुझे वो आयल सीट्स या गलियारे की जो सीट्स हैं वहीं पे बैठना पसंद है. Our next set of words are similar sounding. The first one is Q, C-U-E-Q, and the other one is Q-U-E-U-E, Q. All right, both are similar sounding but both have different meanings. The first one, Q, is a sign for an action. Okay, so पहले वाला जो Q है वो है कोई संकेत. The second one, Q-U-E-U-E, is a line, यानी कतार. The first one is
if I look at an example, the first one is I was looking for a cue from him. Okay, मैं एक संकेत या इशारे का इंतज़ार कर रही थी. The second cue is he has been standing in the queue since morning. He has been standing in the queue since morning. वो सुबह से एक कतार में खड़ा है. Okay, let's move on to the next one. Our next pair is again a little similar sounding. For example, D-U-A-L, dual, and D-U-E-L, dual. Okay, the first one, D-U-A-L, dual, means in two parts or double role probably. The second one, D-U-E-L, dual, is a fight or a competition between people. जो पहला dual है D-U-A-L, ये है दो हिस्सों में या डबल रोल, जो हम बोलते हैं ना कि किसी फिल्म में किसी ने डबल रोल किया है. सो ही इज़ डन अ डुअल एक्ट. ओके, द सेकेंड वन, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन, इट्स अ ड्यूअल, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी प्रतिस्पर्धा की या कोई कंपटीशन की. सो वी कैन से दैट द रेसलर वॉज इन टू अ टफ ड्यूल विद समवन. द रेसलर वॉज इन टू अ टफ ड्यूल विद समवन, यानी वो जो कुश्ती खेलने वाला जो था वो बहुत ही टफ गेम में था किसी के साथ. ओके, लेट्स मूव ऑन. द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव आर probably used in every household, but we need to understand what's the difference between both. इसमें जो है इसके बनाने की प्रक्रिया में difference है. Example, butter and margarine. What is butter? Butter is something that is made out of milk. Butter जो है ये मक्खन है जो दूध से बना हुआ होता है. And if you might have observed or noticed, there is something known as margarine which looks like butter. ठीक है, मार्जरीन जो है ये भी बटर के जैसा ही दिखता है, दिखाई में वैसे ही है, टेस्ट भी काफ़ी उसका वैसे ही है. लेकिन मार्जरीन जो है ये दूध से नहीं बनता, ये बनता है वेजिटेबल ऑयल से, या जो हम तेल बनाते हैं उस तेल में से बनता है ये. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ. ओके, let's look at the next one. Similarly, let us also look at two other words that we use in our probably everyday life. The first word is pills, the second word is tablets. Now, what is the difference between both of them? There's a small basic difference. Pills are mostly orally consumed and they are round in shape. जो pills हैं ये हमेशा गोल होते हैं और ये orally consumed होते हैं, या हम उसको ओरली कंज्यूम करते हैं. और जो टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट्स के अलग अलग शेप हो सकते हैं, कभी राउंड हो सकता है, कभी लंबाई या ओवल में भी हो सकता है. सो टैबलेट्स कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स. सो व्हेन वी लुक एट देम, दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई देम बाय देयर शेप्स and by the way that they look. So pills and tablets, that was our difference. Our last pair of words today is guarantee and warranty. What is the difference between guarantee and warranty? Guarantee और warranty में difference क्या है? Guarantee is when a seller assures you of the quality of the product. Okay? And warranty is wherein they tell you that okay, I'm selling this product to you. However, in case there is any problem with any parts of it, we will get them replaced for you. Guarantee में ऐसे होता है कि जो product है इसका जो निर्माता होता है, the one who produces it, वो उसकी पूरी गारंटी देता है कि अगर इस प्रोडक्ट में कुछ हो तो मैं इसको टोटली रिप्लेस करके दे दूंगा. सो इट गारंटी ऑलवेज हेल्प्स यू रिप्लेस द प्रोडक्ट. और वारंटी में ऐसे होता है कि आप वो जो प्रोडक्ट है आपको वही रखना पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें तकनीकी वजह से कुछ हुआ हो या उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स में कुछ हुआ हो तो वो सारी चीज़ें वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे. ओके, So to summarize, what we are trying to say is a guarantee is something wherein the entire product in totality is changed and replaced, and in warranty only a spare part, a few parts of it is either changed or it is repaired and given it to you. Okay? So these were a few words that I thought I need to just discuss with you. There are a whole lot of other words also, but I think for today this is what we have made a video on. Also, what I suggest is you can go online, go to some grammar sites and probably do a lot of research to find out more about confusing words that you face in your daily life. Okay, so that's all that I had for today, and I'll see you very soon. In the meanwhile, you know the drill.
व्हाट इज़ अ ड्रिल? ड्रिल में आपको क्या करना है? आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, और जितने लोगों के साथ हो सके इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ कीप सेफ, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई विल सी यू वेरी सून अगेन। बाय।